Hello friends, through this video let us learn how to find mode and median of a given data. This is exercise 3.2 of the chapter data handling of class 7. The question number 1 is the scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows: 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. These are the marks scored by 15 students in a mathematics test conducted for 25 marks. Find the mode and median of this data. Are they same? यहाँ पर हमें मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मोड क्या होता है। मोड उस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार डाटा में आया हो। द ऑब्जर्वेशन या एंट्री भी कह सकते हैं which occurs in the data most frequently or more frequently. Or we can say that the observation, ये सारी एंट्रीज जो हैं ऑब्जर्वेशन कहलाती हैं। The observation which has maximum frequency, ऐसे भी कह सकते हैं। Then what is median? Median is an observation which is just at middle of the arranged data. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट यानी बीचों बीच, मिडिल मोस्ट वैल्यू of the observation arranged in arranged data. डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, the middle most value of the observation is called median. Arranging the data in ascending order, we have, what is the smallest value here? This is 5. Then it is 9. Then 10. Then 12. Then 15, 16, 20 4 times, 23, 24 and 25 2 times. This is the arranged data. Now to get mode of this data,
We are observing here that the observation 20 occurs more frequently. And therefore mode of the data is 20. इसके सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये 4 बार आया है, जबकि 25 2 बार आया है और सारी डिजिट एक नंबर से एक बार आए हैं। 20 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से इस डाटा का मोड 20 हुआ। अब आते हैं मीडियन के लिए। As we know that median is the middle most value of the observation. तो बीचों बीच का ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ 1 2, क्योंकि यहाँ 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दें, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दें, फिर 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, तो बीच में 20 आता है। अतः since middle most observation is 20, so median of the data is 20. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मोड भी 20 है और मीडियन भी 20 है। तो इस पार्ट का जवाब यहाँ से मिलता है कि यस, बोथ मोड एंड मीडियन आर सेम। मीडियन निकालने का दूसरा मेथड भी है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हों, जैसा कि यहाँ 15 है, 15 एंट्रीज हैं, ऑड नंबर है। When number of observations is odd, तब मीडियन जो होगा n+1/2 ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी इन अरेंज डाटा, वो मीडियन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर n = 15 है, 15 + 1 16 हो गया, डिवाइड बाय 2 एट्थ ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी अरेंज डाटा में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एट्थ ऑब्जर्वेशन इज 20, सो मीडियन इज 20। दूसरा केस है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, then in this case there will be 2 entries in middlemost place, so their average of those 2 entries will be the median। लेकिन वो क्लास 7 में ऐसा नहीं बताया गया है, वो क्लास 9th में है। यहाँ पर अगर 2 एंट्री आती हैं तो दोनों को ही मीडियन लिखना है, और उसके लिए फार्मूला 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ये इवन केस के लिए मीडियन निकालने का फार्मूला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज: 6 15 120 50 180 10 15 8 10 15. Find the mean, mode and median of this data. Are the 3 same? Since here we have to find out median also, and therefore we will arrange the given data in ascending order
first. We have arranged the data in ascending order as shown here. Now, mean score is equal to, formula is sum of all the observations upon number of observations. Here we have to add all the scores, 6 plus 8 plus 10 plus 10 plus 15 plus 15 plus 15 plus 50 plus 80 plus 100 plus 120, and then divide by 11 because these are 11 in numbers. The sum is 429 divided by 11 and the result is 39. So, mean score is 39. Now, to find out mode of the data, here we observe that 10 occurs 2 times whereas 15 occurs 3 times. So, frequency of 15 is the highest and therefore mode of the data is 15 and therefore mode is 15. Now, median. Since here there are 11 entries, that is n is equal to 11, number of observations is 11 which is odd, and therefore median of the data will be n plus 1 by 2th observation in arranged data. That is 12 by 2, that is 6th observation in arranged data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is the middlemost value which has been calculated using this rule, and therefore median is 15. Now, the next part of the problem is, are the 3 same? Its answer is no, because mean is 39 whereas mode and medians are 15 each. All the 3 are not same. Now, question number 3, the weights in kg of 15 students of a class are 38, 42, 35 and so on. Find the mode and median of this data. यहाँ पर भी मीडियन कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम डाटा को अरेंज करेंगे और डाटा जब अरेंज हो जाता है तो हमें इस बात का भी पता चल जाता है कि कौन सी एंट्री कितनी बार आई है, जो कि मोड के लिए आवश्यक होती है. दिस इज द अरेंज डाटा, arranged in ascending order. To get the mode of this data, we observe here that 38 occurs 3 times, 43 also occurs 3 times, and therefore there are 2 modes. 38 and 43 both are modes here, as both occurs highest number of times. Now, median. As the number of observations is 15, so there will be 1 observation in middlemost in arranged data. N plus 1 by 12th observation in arranged data will be the n is 15, so 15 plus 1 by 12th observation. 16 by 2, that is 8th observation. And what is that? First, second, third, fourth, fifth, sixth and eighth. 38 is the
8th observation, so median of this data is 38. Now answer for the second part of the problem. Is there more than one mode? As it is clear from this that there are more than one mode. Now question number 4, find the mode and median of the data. As median is required here, for which the data is to be arranged. So here we have arranged it in ascending order. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, then 16 and 19, as we observed here that 14 occurs highest number of times, and therefore mode of this data is 14 as it has highest frequency. Now n is equal to 9 here, which is odd, and therefore median of the data is n plus 1 by 2th observation. Put n is equal to 9, so 9 plus 1 by 2, that is 10 by 2, means 5th observation. Count 5th observation from the beginning, 1, 2, 3, 4, 5th. So 14 is the median of this data. Here you see that both mode and median are same for this data. Now question number 5, tell whether the statement is true or false. The mode is always one of the numbers in a data, as you have seen in the questions from 1 to 4 that mode is always one of the numbers in the data. So this statement is true. The mean is one of the numbers in data is not true, because it can be in decimal also. So this is false. The median is always one of the numbers in a data. Median is always one of the numbers. Sometimes there will be two numbers in the middlemost position. So it is not true to say that median is always one of the numbers. वहाँ पर दो नंबर भी हो सकते हैं बीच में. जब इवन नंबर टाइम्स ऑब्जर्वेशन होते हैं तो वहाँ पर दो वैल्यूज़ बीच में आती हैं अरेंज डाटा में, और वो दोनों ही मीडियन होती हैं अप टू क्लास 7th लेवल में. Now the last part of this question is the data this has mean 9. To check this, we will calculate whether this statement is correct or not. Here the sum of the observations is 64, and these are 8 in numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sum of the observation divided by number of observations, 64 by 8 gives 8, and this says that the data this has mean 9 is wrong, because the mean comes out to be 8. 8 इसका मीन आता है, जबकि सेंटेंस में 9 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. इस वीडियो में मात्र इतना ही. उम्मीद है कि मीन, मीडियन और मोड निकालना आपने सीखा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.